Start your video. Okay, seventh class today. As you know that we are discussing our chapter symmetry, chapter number 14. In last lecture, we have already discussed about some symmetric image, and we already discussed about symmetricity about a line, yes, a line of symmetry of any object. As we know that if this is your triangular shape and this is your isosceles triangle, now if you want to find out the line of symmetry, two sides are equal, this will be the vertical line, will be the line of symmetry. This is called mirror line or line of symmetry. कल के हमने लेक्चर में ये सब बातें हमने पढ़ी हैं. हमने लाइन ऑफ सिमेट्री को पढ़ा, हमने एक फिगर बनाई, दैट वाज द फिगर. फॉर दिस फिगर, this is the line of symmetry and you have to complete this figure. What will be the complete result of this figure? As the line of symmetry is vertical and this figure will be this, so this figure will become rectangular shape. In the last lecture, all these things we have already discussed that point. And vertical line is a line of symmetry. एक्चुअली लाइन ऑफ सिमेट्री इसको बोलिए या इसको मिरर लाइन बोलिए, आपके लिए एक ही बात थी, क्योंकि आपको एक वर्टिकल लाइन दी थी, आपको देखना है कि उसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपकी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई दे रही है. टुडे द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल का मीनिंग क्या होता है? यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री आपको गिवन है. इस लाइन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या है कि जो लेफ्ट में आपको इमेज गिवन है वैसी इमेज आपको राइट साइड में भी दिखाई दे, तो इट मींस दैट ये लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है. अगर आपको कोई ऐसी फिगर, जैसे हमने कहा दिस इज अ सर्कल एंड लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द सर्कल इज डायमीटर. डायमीटर इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. सो if we will discuss about the line of symmetry as a diameter, so this upper image will be symmetric about its lower image. So in the last lecture we already discussed that point. In the today lecture we will discuss about the rotational symmetry. What is the meaning of rotational symmetry? rotation का meaning का, rotation होने का meaning क्या है आपको? अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए दिस ऑब्जेक्ट इन दिस वे, आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और आप देख रहे हो कि इस पेन के दोनों साइड हमने एक कैप लगाई हुई है, ब्लू कलर एंड दिस इज अ रेड कलर कैप. और दोनों का जो कैप का ये अपर पोर्शन आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, दिस इज द अपर पोर्शन. अगर आप इसके पूछे कि रोटेशनल सिमेट्री इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगी, मीन्स आप इसको कितने टाइम्स रोटेट करें जिसके बाद ये ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाए. कितनी टाइम्स आपको रोटेट करें, कितने टाइम्स रोटेट करने के बाद इसे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए. इसके लिए आपको रोटेशनल सिमेट्री निकालने के लिए आपको ये रोटेट करना पड़ेगा, और जितने टाइम्स आप इसको रोटेट कर रहे हैं दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. तो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा? जितने टाइम इसको रोटेट कर रहे हैं. we will get understand with the help of with this example. I am drawing a square figure. हम इसको यहाँ एक स्क्वायर फिगर की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे, और हम इसके रोटेशनल सिमेट्री के साथ साथ आपको इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे. रोटेशनल सिमेट्री एंड ऑर्डर. इफ दिस इज अ स्क्वायर फिगर एंड दीज आर द डायगोनल्स एंड पॉइंट P is written at this vertex. Are you looking here? This is the point P and we are darkening this point. This is the point P. If you rotate this square figure by taking this point as a rotational point, आपने इस फिगर को रोटेशनल पॉइंट लेके यहाँ से रोटेशनल पॉइंट लेना है, और आपको इस फिगर को
रोटेट करना है अबाउट इट्स 90 डिग्री एंगल. So if you rotate this figure about its 90 degree angle, means this point will be move in the downward direction. So the new figure will be in such a way that this point will be rotated through a 90 degree and this will become in the downward direction. So these are the diagonal. So this is your 90 degree. Now again you have to rotate this figure 90 degree. इस रोटेशन का आपको कैसे पता चल रहा है कि आपकी रोटेशन ये 90 डिग्री पे हुई? आपको ये P पॉइंट वर्टेक्स का पॉइंट यू आर लुकिंग हियर एंड यू आर रोटेटिंग दिस पॉइंट अबाउट इट्स 90 degree. This will move in the downward direction. So this point P, now location of point P will be here. Now again you have to rotate this about 90 degree. What will be the new figure? The new figure will be this. Now this point is, as you are rotating this through the 90 degree, this move at this position. Point P will move from this point to this point. So this will be the point P. Looking from this figure, now you have to rotate again this figure. फिर से हमने रोटेट किया इसको about its 90 degree angle. So new figure will be, what will be the new figure? This will be the new figure and point P will be at this point. यहाँ से मूव करके 90 डिग्री मूव करोगे आप इसको भी, इस फिगर को, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो जाना है. So these are the diagonal. Now again you have to rotate this. You are rotating this figure at a 90 degree. आपने 90 डिग्री पे फिर से रोटेट किया इसको. The new figure will be this one, and in this figure, this is our first figure, original figure. You can say original. This is our second figure. After rotating through 90 degree, this is our third figure after again rotating 90 degree, and this is our fourth figure, and this is our fifth figure, which we get the point P will be this point. So you are looking, first look at the figure number first and fifth. These are the same figure because point P lie on this vertex in the first figure, and in the last fifth figure point is lying on the same position. मीन्स आपको फर्स्ट से फिफ्थ पे आने के लिए इस फिगर को कितने टाइम्स रोटेट करना पड़ा? पहले आपने यहाँ रोटेशन दी 1 2 3 4. You have to rotate this figure 4 times. It means that order of rotation will be 4. Simply order of rotation is equal to 4. What is the meaning of order of rotation? I am repeating again. Order of rotation means you are repeating this figure 4 times for getting your original figure. Original figure को लेने के लिए आप इस figure को कितने times rotate करते हैं, that will be the order of your rotation. So order of rotation, अगर इसको simple language में हम लिखें क्या होगा? Number of rotation to get original figure. This number of rotation to get original figure is called order of its rotation. आप कितने times इसको rotate करते हैं, so that will be the order of its rotation. So rotational symmetry, this is the first example. With the help of this we are understanding the rotational symmetry, and now we will take the next example. With the help of next example we will understand the rotational symmetry and order of the symmetry. I hope that you are understanding this example and you are understanding the rotational symmetry and order of symmetry. Okay students, I am taking again
नेक्स्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द रोटेशन। अब ये स्क्वायर फिगर था आपके लिए, आपको स्क्वायर फिगर में कितने डिग्री पे आपने रोटेट किया, 90 डिग्री पे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर एक फिगर में 90 डिग्री पे ही रोटेट करेंगे, दैट मे बी द चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इफ यू आर टेकिंग ए ट्रायंगल, now we will take another example of an triangle. In this triangle we will find, actually this is an equilateral triangle. Equilateral triangle means all sides are equal, all sides are equal. Equilateral triangle, all sides are equal. Now for this equilateral triangle you want to find out the order of symmetry and symmetric image of this object. अगर ये सेंटर का पॉइंट है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल एंड वी आर जॉइनिंग हियर। अगर आप जानते हो कि सेंटर के किसी पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना बनता है, सेंटर के किसी पॉइंट पे, जैसे आपका एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे कितना कंप्लीट एंगल होता है, इफ वी आर ड्राइंग हिज एट डायमीटर, दिस कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना है, दैट इज 120, दिस एंगल कितना होगा 120, दिस एंगल इज ऑल्सो 120। तो कंप्लीट जो एंगल बनने वाला है दैट इज 360 इन केस ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे यहाँ सेंटर के केस में ये कंप्लीट एंगल की 360, तो इक्विलेटर ट्रायंगल के केस में ये एंगल आपका 120 डिग्री होता है। इट मीन्स दैट यू हैव टू रोटेट दिस ट्रायंगल अबाउट 120 डिग्री एंगल। अभी हम इसको एक ही 120 लिखते हैं, आप समझ गए हैं। This angle is 120 degree angle. Rotate this equilateral triangle about its 120 degree angle. अब रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वो कुछ भी रोटेशन हो सकता है, इट डजंट मैटर। क्या आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है, आप एक ही रोटेशन स्टार्टिंग में लेंगे, या तो क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज 120 डिग्री एंगल। Now you are rotating this figure in such a way that in this direction, means आपको इसको रोटेट करना है इस एंगल पे। अब ये साइडें आपकी चेंज होंगी बिकॉज इक्विलेटर, दिस इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, तो साइडों का चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं नजर आएगा आपको, तो ट्रायंगल आपको सेम ही नजर आएगी बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। अगर आपकी कोई स्केलन ट्रायंगल है या फिर आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उस केस में आपकी चेंज होती है रोटेशन से, तो आपको फिगर चेंज होती हुई दिखाई देती है। सपोज कीजिए दिस इज ए फिगर, दिस इज ए स्केलन ट्रायंगल। अगर आपके ये आपने 5 सेंटीमीटर लिया, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। अगर आप इसको किसी एंगल से रोटेट करते हैं, सपोज कीजिए दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इट्स रोटेशन, एंड इफ यू वांट टू रोटेट this figure about some angle, here I cannot explain that it will be the 120 angle because we have no surety. In case of equilateral triangle we have surety, this will be the 120 degree angle. Here we have no surety. If you want to rotate this about some angle, so means 5 centimeter side will be in downward direction and 7 centimeter side will be this direction. This will be 7 centimeter and this is 5 centimeter and this is 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये फिगर इस तरह से दिखाई देगी। दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल बट दिस विल लुक लाइक दिस इन दिस वे। तो ये आपको इस तरह से फिगर दिखाई देगी। अब इसमें आपको, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, देयर इज नो इफेक्ट व्हाइल चेंजिंग व्हाइल रोटेटिंग इट। तो आपको कोई डिफरेंट आपको फिगर नहीं दिखाई देगी। इसमें आपको हो सकता है कि अलग से फिगर दिखाई दे, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस स्केलन ट्रायंगल, दिस इज एन स्केलन ट्रायंगल। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती है, स्केलन में तीनों साइड डिफरेंट होती है आपकी, इक्विलेटर में तीनों साइड इक्वल होती है। सो
we are working with our equilateral triangle and we want to rotate here this triangle. आप इसको कुछ भी नाम दे लीजिए. This is the point P, A, B, जो भी आप नाम देना चाहिए. If after rotating through a 120-degree angle, this point P will be this point. Point P आपको rotate होके यहाँ पे आ जाना है. Means नई फिगर आपको इस तरह से दिखाई देगी. So this will be the new figure. Now you have to rotate again 120-degree angle, but rotation should be same as the first rotation. जैसे आपने पहली triangle को rotate किया, इसी तरह से अब इसी position पे triangle को rotate करेंगे and in the same direction. Okay, this direction will be anti-clockwise. Next, after rotating this figure, new figure of this is your first, this is your second, and this is your third figure. So after rotating 120, P point will lie here. So this is your P point, and now you have to again rotate this point, rotate this triangle. अब फिर से आपको इसको 120 डिग्री पे एंगल को रोटेट कर देना है. तो न्यू फिगर विल बी हियर. आई एम ड्राइंग दिस फिगर इन दिस पार्ट. दिस विल बी योर P पॉइंट. क्योंकि आपको 120 डिग्री पे फिर से रोटेट हो जाएगा. P पॉइंट कहाँ मूव करेगा? ऊपर. और नाउ यू आर लुकिंग दिस फिगर. आपने यहां से रोटेशन दिया इसको 120 डिग्री. This is your fourth figure, and you can observe that your first figure and your fourth figure is same. In first figure, P point lie on the upper vertex of this triangle. Upper vertex of this triangle. In the fourth figure, this point P also lie on the upper vertex. This is your vertex. So first and fourth figures are same. It means that this equilateral triangle has a rotational symmetry, because after rotating through sometimes after rotating through some angle, you can get your original figure. This is your original figure. Now you need not to rotate again, because you want to find out the rotational symmetry. First figure is an equilateral triangle and point P lie on the upper vertex. In the second figure, P move at this point. Now in the third figure, P move in this vertex, and in the fourth figure, point P move on the upper vertex. This figure is same as that of first figure. So we can say that this equilateral triangle, this is your original equilateral triangle, and this has a rotational symmetry. And what will be the order of rotation? Now again we will describe the order of rotation. What will be the order of rotation? Order of rotation means how many times you are rotating this figure to get original figure. आप सेम ऐसी फिगर लेने के लिए आप इस फिगर को फर्स्ट फिगर को कितने टाइम्स रोटेट कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम रोटेट करने के बाद आपको ये वाली फिगर मिली. आफ्टर रोटेटिंग द सेकंड यू आर गेटिंग दिस figure, and after rotating 3 times you are getting this figure. So order of rotation will be 3. For the equilateral triangle, order of rotation will be 3, because after rotating 3 times you are getting your original figure. So this is the main concept of rotation of symmetry, and while calculating the rotation of symmetry you have to explain the order of rotation. Now come to the exercise 14.2. We will discuss some question from the 14.2. Our first question is, you are looking a figure in first question, exercise 14.2.
First question, first part. You are looking a figure. This is a shape like that in your statement, and you want to find out what you have to describe that there are a total 12 figure of your first question, and you have to explain which figure has a rotational symmetry. In case of rotational symmetry, find the order of rotational symmetry. जैसे अगर किसी फिगर का रोटेशनल सिमेट्री है तो आपको उसका ऑर्डर भी एक्सप्लेन करना है. पहले तो ये बताना है कि ऑर्डर सिमेट्री है भी है या नहीं है. तो यू फॉर द फर्स्ट पार्ट यू आर लुकिंग हियर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस फिगर. आप बताइए क्या इस फिगर के लिए रोटेशनल सिमेट्री होगी. अगर रोटेशनल सिमेट्री है तो किस ऑर्डर की होगी. दिस इज लाइक दैट. आपको एक तरह से एक लाइन गिवन है, उस लाइन का ये अपर पार्ट उभरा हुआ है और डाउनवर्ड पार्ट यहाँ से उभरा हुआ है. आप ये समझ सकते हैं कि इस फिगर के केस में इफ यू आर टेकिंग ए पेन तो ये आपका उभरा हुआ पोर्शन यहाँ पे है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इस डाउनवर्ड कैप को इस तरह से लगा लेते हैं. अब आप इसको कितने टाइम्स रोटेट करें कि ये ब्लू वाला ऊपर आ जाए. यू आर लुकिंग दिस कैप ऑफ योर पेन. ये ब्लू वाली कैप यहाँ पे ऊपर अपर पोर्शन पे है और रेड वाली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कैप. हमने इस तरह से शेप बनाई हुई है. अब आप इसको कितने टाइम्स रोटेट करें कि ब्लू वाला फिर से ऊपर आ जाए, और क्या आ भी पाएगा. तो यही आपको रोटेशन बतानी है. अगर आपने इसको किसी 180 डिग्री पे मूव किया तो ये वाला फिगर कितनी आएगी 180 पे मूव करने के बाद. इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन रेड ऊपर आ जाएगा. अगेन यू विल मूव फ्रॉम ए 180 डिग्री एंगल, दिस विल बिकम योर ओरिजिनल फिगर. तो मीन्स दो बार 180 डिग्री के 2 टाइम्स रोटेट करने से वही फिगर हमें सेम मिल रही है, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री विल बी 2. अगेन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. आपके फिगर जो बनी हुई है इसमें ये वाला पार्ट आपको, यू आर लुकिंग दिस पार्ट. This is your blue part and this one is your red part. आपने इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, मीन्स आपने इसको ऐसे किया और ऐसे घुमा दिया. तो 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद व्हाट फिगर यू आर गेटिंग. अब ये जो ब्लू पार्ट है दैट विल बी इन द डाउनवर्ड एंड रेड पार्ट विल बी द अपवर्ड. अब ये रेड वाला पार्ट आपका ऊपर की तरफ आएगा और ब्लू वाला पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ. Are you getting this point? Again you have to rotate this figure. After rotating again you will get the figure in this way. This is your blue part. अब blue part फिर से ऊपर आना है इसको और red part फिर से नीचे आ जाएगा. Means this was your first figure, this is your original figure, this is your second figure and this one is your third figure. That is same as your original figure. Means first और third आपका same figure की तरह दिखाई दे रहे हैं. How many times you are rotating this figure? You are rotating 2 times to get its original figure. So order of symmetry will be 2. What will be the order of symmetry? Order of symmetry will be 2. So in this way, this figure has a rotational symmetry. पहले तो आप ये लिखेंगे yes. अब वहां एग्जाम में आपको या अपनी कॉपी पे लिखने की ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने समझाने के लिए लिखा आपको. आप लिखेंगे यस हैज रोटेशनल सिमेट्री. पहले तो आपको बताना है क्या रोटेशनल सिमेट्री है. रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है क्या कुछ करने के बाद, कुछ टाइम रोटेट करने के बाद क्या ये ओरिजिनल शेप में आ सकता है. यस आ सकता है. हैज एन रोटेशनल सिमेट्री एंड ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विल बी 2. ऑर्डर ऑफ रोटेशन या आप इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल बी 2 is 2. In this way you have to give your answer. So in the same way you will calculate the second part and third part. In the second part has a rotational symmetry, third part
Third part has a no rotation symmetry. इसमें आपको कोई रोटेशन सिमेट्री नहीं मिलती। इसी तरह से फोर्थ पार्ट जो आप दैट आर लुकिंग लाइक ए स्क्वायर हैज ए रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2. So in this way you have to observe all these figure and you have to calculate whether it has a rotation symmetry or not. Are you getting this point or not? Now last figure, first question के जो last figure है उसको explain करते हैं. All these part will try yourself. Very simple chapter. You are looking at a circle and figure is like that. This is your center point of your rotation and you have to find whether this figure has a rotation symmetry or not. इसकी rotation symmetry है भी है या नहीं है. Whether this has a rotation symmetry or not. So 14.2, this was your first question. ये आपका last part है. आपको ऑब्जर्व करना है क्या ये रोटेशन सिमेट्री भी है या नहीं है. तो इसको रोटेशन सिमेट्री ऑब्जर्व करने के लिए एक्चुअल में आपको पहले से बता दूं, इट हैज ए रोटेशन सिमेट्री एंड इट्स ऑर्डर इज 4. आपको ये ऑर्डर इसका 4 रहेगा. इसको चेक करने के लिए आप इस तरह चेक कर सकते हैं. किसी भी पॉइंट पे आप पॉइंट P लिख लीजिए या पॉइंट A लिख लीजिए, कुछ भी नेम दे लीजिए और आप इसको रोटेट कीजिए अबाउट इट सम एंगल. आप इसको रोटेट करेंगे. फर्स्ट टाइम रोटेट करने के बाद पॉइंट P यहाँ होगा, सेकंड टाइम के बाद यहाँ होगा, थर्ड टाइम के बाद यहाँ, फोर्थ टाइम के बाद यहाँ पे. या दूसरा वे क्या हो सकता है इसको करने का कि आप इस तरह से इसको कलरफुल कर लीजिए. ब्लू, नेक्स्ट इज रेड पोर्शन और थर्ड में आप ये प्लस वाला कुछ सिंबल डाल लीजिए इस पे और यहाँ पे रेड वाला प्लस सिंबल. अब आप इसको रोटेट कराइए इस फिगर को और ऑब्जर्व कीजिए क्या ये वाला पोर्शन इस पोजीशन में किस टाइम आएगा. आफ्टर हाउ मेनी रोटेशन यू विल गेट दिस फिगर. सो इफ यू रोटेट थ्रू first time your P point will be here, so new figure will be in this way. This will be the P point and you will get new figure. This will be the P. तो ये वाला पोर्शन आपका जो है लाइनिंग वाला वो यहाँ पे आएगा, रेड वाली लाइनिंग यहाँ पे आएगी और फिर ये प्लस वाला पॉइंट you will get here and red plus will get here. So after rotating through this point, this is the first rotation. After second and third rotation you will get your original figure. So order of rotation will be 4. Order of rotation will be 4. So this is a rotational figure. In the